Very great afternoon, dear students. Today we are going to discuss our next topic, electrical resistance. In the previous lecture, we have discussed about the Ohm's law, its experimental verifications, and VI characteristics of Ohm's law. Now, in this lecture, we are going to discuss very important topic, electrical resistance. So, dear students, let's start. Electrical resistance is denoted by symbol capital R. So what is electrical resistance? बेटा what is the meaning of resistance? Resistance का meaning होता है oppose करना, किसी चीज को रोकना, oppose करना. So what is electrical resistance? As you know, every conductor has the property to oppose the flow of current and this opposition for flow of current is called as electrical resistance. Of the conductor. It is denoted by capital. So बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? Every conductor has the property to oppose the flow of current, and this opposition for flow of current is called as electrical resistance of the conductor. It is denoted by capital R. Clear? Okay, students. As we know that Ohm's law is given as we know that Ohm's law is given as, what is Ohm's law? V is equal to Ri. So what is R from here? R is equal to V upon I. This is equation number 1. Where V आपके पास क्या है बेटा? Where V is the potential difference applied. V आपके पास क्या है? Potential difference applied. I is the current. I is the current flowing. And R आपके पास क्या है? Resistance of conductor. This is the Ohm's law. What is Ohm's law? In the previous lecture we have discussed physical conditions such as temperature, pressure, mechanical strength. Physical condition remaining unchanged, it is found that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends. So this is the Ohm's law. V is equal to Ri, R is equal to V upon I from this formula. So from equation 1, Ohm's resistance is defined as, from equation 1, resistance of conductor is defined as resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference. This ratio है the ratio of potential difference. Resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference applied
across its end, इसके एंड कंडक्टर के एंड। The resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference applied across its ends to current flowing. Ratio of resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference applied across the conductor to current flowing through it. So resistance of a conductor is defined as ratio of potential difference applied across the conductor to current flowing through it. इसकी रेशियो है ratio of potential difference V applied across the conductor to current I flowing through it. What is resistance? Every conductor has the property to oppose the flow of current, and this opposition for the flow of current is called the resistance. And from this equation, resistance of a conductor is defined as ratio of potential difference applied across the conductor to current flowing through it. Clear? Okay. Now, unit of electrical resistance. Unit of electrical resistance. Unit of electrical resistance. यहाँ से from equation 1 R is equal to by I, R is equal to V upon I. V आपके पास क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस. I आपके पास क्या है? करंट. So what are the unit of potential difference? Volt. I आपके पास करंट इसके एम्पियर. यहाँ V लिख दिया आपने, यहाँ A, तो ये बनेगा आपके पास वोल्ट पर एम्पियर. और रेजिस्टेंस के अंदर आपके पास आ गया वोल्ट पर एम्पियर. दिस इज नोन एज द ओम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओम. क्लियर? यहां से हमने कैसे लिख दिया? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू करंट फ्लो थ्रू इट. देखो मैं आपको रेजिस्टेंस of a conductor is the ratio of potential difference applied across the ends of conductor to current flowing through it. Resistance of a conductor is the ratio of potential difference applied across the ends of conductor to current flowing through it. Okay. क्योंकि बेटा देखो ये डिफाइन मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये डिफाइन आ जाए कि आपको इसके यूनिट जो हैं ये आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं इजीली. सो R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू बेटा वोल्ट, करंट के एंपियर, वोल्ट पर एंपियर, एंड वोल्ट पर एंपियर इज नोन एज द ओम. सिंपलेस्ट आ गया. ये आपके पास इसका सिंपल आ गया. क्लियर? नाउ डिफाइन वन ओम. डिफाइन वन ओम.
find 1 ohm. From this equation, from R is equal to V upon I, if V is equal to 1 volt, I is equal to 1 ampere, then R is equal to 1 volt per ampere, R is equal to 1 ohm. So how will we define? Resistance of a conductor is said to be 1 ohm. That would be resistance of a conductor is said to be 1 ohm. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it whenever a potential difference of 1 volt is applied across the whenever a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it only conductor में से कब फ्लो करेगा इसमें से 1 ampere का करंट whenever a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor. So resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it whenever a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor. Clear bete? Now we have to discuss the dimensional formula for electrical resistance. Dimensional formula for the electrical resistance. Resistance आप समझे होंगे तो resistance of a conductor is the ratio of potential difference applied across the conductor to current flow through it. Now the dimensional formula of electrical resistance. Dimensional formula. Dimensional formula. क्या बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 R की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास R is equal to V upon I. V आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा V is equal to W upon Q, वर्क अपॉन चार्ज. V is equal to W upon Q, वर्क W क्या आपके पास वर्क, Q आपके पास क्या है चार्ज. तो वर्क के लिए क्या बनेगा बेटे M L2 T minus 2, चार्ज के लिए आपके पास आ जाएगा बेटा 80, so it become as M L2 T minus 3 A minus 1. M L2 T minus 3 A minus 1. This is the formula for potential difference. M1 L2 T minus 3 A minus 1. फिर करेंगे R is equal to ये हो जाएगा M L2 T minus 3 A minus 1
और करंट की रीडिंग आ गया एम्पियर एम L2 T minus 3 और A minus 2 M L2 T minus 3 A minus 2. Clear है बेटे? This is the dimensional formula for the electrical resistance. Now we have to study the cause of electrical resistance. इसके जो cause है resistance बेटा इसका रीजन क्या है? रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है? Now we have to study. So let's study the cause of electrical resistance. So friends, let's study. But now we have to discuss the cause of resistance. अभी हमने स्टडी किया रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन. Every conductor has the property to oppose the flow of current and this opposition is known as the resistance. ये जो बेटा रेजिस्टेंस है ये क्या करता है कि जो भी हमारे चार्ज कैरियर हैं उनके मोशन को करता है अपोज करता है. ठीक है कि नहीं? The resistance of a conductor implies the opposition. The resistance of a conductor implies the opposition which the conductor और वो opposition किसके लिए ऑफर करता है? वो to the flow of charges. जब भी हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर को सेल या बैटरी से जोड़ते हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है. क्या कहा मैंने? जब भी हम किसी कंडक्टर में सेल या बैटरी जोड़ देते हैं तो उसमें क्या है जब भी सेल या बैटरी से कंडक्टर को जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड होते हैं. जब भी कंडक्टर को हम सेल या बैटरी से जोड़ते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो भी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होते हैं एंड whenever these electrons get excited they start colliding with the positive ions present in the conductor और वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करते हैं. ठीक है. और जब ये कोलिजन होता है तो इस कोलिजन की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है. क्लियर है? लेट्स सी. Resistance of a conductor implies the opposition which the conductor offer to the flow of charge through it. When a potential difference is applied across a conductor, potential difference कैसे अप्लाई होगा बेटा? जब भी हम उस कंडक्टर को सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. Due to this, the free electrons get excited. When potential difference is applied across a conductor, an electric field is set up across the two ends. Due to this, the free electron get excited. As the electron move, they collide against the ions and atom, and their motion is thus opposed. This opposition offered by the atoms and ion is termed as resistance of the conductor. Clear है बेटे? So this is the cause of the resistance. कि जब भी हम क्या करेंगे कंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करेंगे एंड दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयन एंड व्हिच इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. उसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है. क्लियर है बेटे? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.